दीप्ति मैम भी आने वाली हैं। गुड Good मॉर्निंग। morning, ma'am. लो मैं आ Good गई। morning. Very good morning, everyone. Yes, Good I'm morning. very very Good happy. So morning. good morning. Good morning, ma'am. Morning. सबकी जय So जयकार. Deepak is morning. complimenting all of you and saying so Good much energy, morning. and जय Savita जयकार. ji, Good you evening. started. Thank you to Deepak sir. Thank you. So, very good morning to everyone and all to the YouTube. And I'm seeing so many names like this, which are like art, creation, blessed, and, like all of that. So, yeah, now we all have a different taglines or tag names attached to our names. So, Bitti ji bhi blessed Bitti ji ho gayi hai ab. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Yeah. आपसे हमको लगता है एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहे हम, अपना हाँ नाम देख के भी खुशी हो जाती। हाँ एक्चुअली वो तो ब्लेस तो है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यूनिवर्स वाज ऑलवेज ब्लेसिंग अस। हम ही को वो हमने फनल अप नहीं किया था ना अपने लाइफ में। अब यस हम उसको यस फनल कर रहे हैं, सारे फोर्सेस पावर ऑफ द यूनिवर्स को अपनी लाइफ के अंदर, एंड नाउ वी आर इन अलाइनमेंट। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वीव लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड स्मॉल लिटिल बिग एक्सपीरियंसेस जो हमारे साथ हो रहे हैं, दे आर माइंड ब्लोइंग। आई मीन येस्टरडे आई वाज जस्ट थिंकिंग, अभी जब मैं सुबह ब्लेसिंग्स लिख रही थी, सो देयर वर सो मेनी थिंग्स, रिमेंबर द मैजिक जो करते हैं। तो कल इतनी छोटी छोटी चीजें हो रही थी, एंड इट वाज जस्ट हैपनिंग आउट ऑफ द ब्लूज। एंड आई वाज आल्सो वंडरिंग दैट in at the place. So I had like a seminar yesterday, and the place where I went to is very crowded, something like Chandni Chowk. So you can imagine getting a parking there, and I've got like a huge car. So मुझे ही लग रहा था कि मैं क्या करूंगी। तो मैं सुबह सुबह जब हैव अ मैजिकल डे हम लोग करते हैं, तो मैं सुबह ही लिख के गई थी, बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट वाज इन माय माइंड, दैट हाउ एम आई गोइंग टू गेट द पार्किंग देयर, बिकॉज आई वाज गोइंग देयर एंड आई न्यू मुझे आज पहुंचते पहुंचते 10 बज जाएगा वहां पे। एंड देन बाय 10 इट्स क्राउडेड, बिकॉज दैट प्लेस इज फुल ऑफ बैंक्स ऑल अराउंड, डिफरेंट डिफरेंट बैंक, एंड मारुति सुजुकी का मेन हेड ऑफिस एंड शोरूम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई वाज वंडरिंग, और मारुति की कार्स बहुत सारी होती है ना, बिकॉज पीपल कम देयर फॉर सर्विसिंग ऑल्सो। इट्स सेल काउंटर, वेर इज इट इज ऑल्सो द सर्विस ऑफिस and the head office. So I was wondering, so I just written it down there, and you will not believe, the safest, the best parking space right in front of my office is what I got out of the blue. And these little magics keep happening that has made life so easy. I mean, then that's what I realized, that why do I even need to think about anything that pata nahi hai hoga ki nahi hoga, because sab itni aaram se ho jata hai. So just putting it and designing the day according to our wish is something that we should all need to do, and everything is sorted for us. So this is just as an example. Uske baad, everything that happened, I was a little bit sweaty about, like a book that I had to complete yesterday, and I had given myself deadline of yesterday. Ki aaj ye, and someone just came and said that I've got this content. Would you want to use it? Then I thought that, okay, just give it to me. And it was exactly something that, one of my trainers had written, and it was sorted. I just edited that and I added it to that content, and it was over. So by the time I left, so this is the reason in the morning when I was writing this only, that thank you, universe, that, it was such a conclusive and fulfilling day. Because when I came back, I had actually completed all the work, whereas after the seminar, I had very little number of hours to even work on that particular project, on the book that I'm creating. And everything was so easy and so effortless, because the world's a beautiful place to live. So that is what we need to ingrain, because everything is beauty, abundance, and luxury. And that's what we are attracting into our life all the time. Yeah. So today's chapter is very, very beautiful. We are done with our dreams. Now we will be building up on our dreams, building up on the person we are, on the identity we have, and the character we are. Okay, by appreciating things which are outside of our life that we have not really been appreciating to that extent. Of course, जो लोग बहुत टाइम से सेशंस कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी पता है. सो हमारा जो कनेक्शन है नेचर के साथ, हमारा कनेक्शन नेचर के साथ, नेचर में सन, ड्यू ड्रॉप्स, ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज, flowers, the colors of the flowers, the weather, the breeze, the wind, the rain, the clouds, the sunshine, everything. I mean, the ocean, the sea beaches, the sand,
the mud, everything is there into the nature. And when we establish a relationship with that nature, you will see that your life starts changing from the cellular level. Okay, so loving that nature, of course, we see all of us have fallen in love with nature. All of us enjoy the nature. We love being by the sea beach. We love looking at the tree, and अपने दिल से अब निकलता है कि I love you trees, for, just giving out oxygen throughout the life, and we've never said thank you. इतनी आराम से हम ब्रीद उसको करते हैं, उस ऑक्सीजन को जो ट्रीज देते हैं. ठीक है, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते रहे हैं बचपन से लेके अभी तक, लेकिन हमने शायद कभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और उनके प्लांट्स को थैंक यू नहीं बोला है, कभी एप्पल ट्रीज को थैंक यू नहीं बोला. सो एप्पल को बोला होगा, उनके ट्रीज को नहीं बोला है. एंड वो फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल ग्रेन्स, दालें, सब कुछ ये सब तो दे ही रहे हैं जो हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं. जो घर में लग्जरीज हैं, फर्नीचर है, गीजर है, सब मदर अर्थ से निकले हुए हैं. ठीक है, उनको, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना और नेचर के लिए ग्रैटिट्यूड फील करने की वजह से there is an intrinsic power that comes in our life, and we become that alchemist. And that is what today's chapter is all about, becoming an alchemist. Alchemist is someone who can turn even stone into gold. ओके, समवन जो बहुत ही वैसी चीज है जो कोल को भी गोल्ड बना दे, है ना. तो उस तरह के इंसान बन रहे हैं हम जब नेचर से कनेक्ट होंगे. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, whenever you all travel, and even if you're not traveling, appreciating the small flowers. बैंगलोर से राजेश जी इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स के फोटो भेजते रहे हैं अभी तक. सनसेट्स एंड सनराइजेस, द ओशन की पिक्चर्स, कहीं ब्यूटीफुल ट्रीज नजर आते हैं, उनसे प्यार करना. तो उस तरह के लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड जब पहुंचता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली इंट्रिंसिकली हम लोग सेलुलर लेवल पे वी डिराइव सम पावर इनसाइड अस, बिकॉज दिस यूनिवर्स इज ह्यूज, and the same power that the universe has, which has created this world, comes inside of us. So today we are actually capturing that kind of a power, and then you will see that you will become quick manifestors. जितना ज्यादा नेचर को अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, अगर आपको ट्रीज दिखते हैं, कम से कम 5 ट्रीज को थैंक यू एंड आई लव यू बोलना हमारा बनता है. वी ओव इट टू द ट्रीज, ओके, बिकॉज वी बिन इनहेलिंग ऑक्सीजन जो उनसे निकल रही है इतने टाइम से. और जितना वो एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं, हम क्यों बोलते हैं प्लांट ट्रीज? सो बिकॉज यू प्लांटिंग अ लाइफ, right? I mean, that tree will give oxygen to so many other people. So your blessing continues as the tree grows up. So always giving plants to someone will definitely bring a lot of happiness to someone's life, or even putting the plants in your house or whichever way it is, and appreciating the plants and kind of really saying thank you to the nature. Thank you when the sunrise happens. Celebrate the sunrise, celebrate the sunset, celebrate the moon. We do that, all of that now. And majorly अगर हमारी लाइफ में बहुत मेजर डिफरेंस अगर आ रहा है, तो वो नेचर को सेलिब्रेट करने की वजह से आता है. ठीक है, even if it's a small butterfly that you see and your eyes are just wandering, after the butterfly, looking that how it is going, it is nature, such a beautiful creation. Okay, so even if it is that, that is bringing a difference in our life, because हम लोग इतने कंज्यूम्ड रहते हैं अपनी प्रॉब्लम से कि हम भूल गए हैं कि इतनी abundance में हमारे पास इतना ब्यूटीफुल नेचर है. सो व्हेन वी अप्रिशिएट दैट, उसके सामने जो हमारे लाइफ के छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, मनी एंड हेल्थ एंड दिस एंड दैट, वो अपने आप डिसिपेट हो जाते हैं. ठीक है, बिकॉज वो लेवल ऑफ एप्रिसिएशन जब किसी की लाइफ में आती है, तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है, इश्यूज जो हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं, रिलेशनशिप एंड दिस एंड दैट, ये अपने आप मास्क हो जाते हैं, एंड दे डोंट इवन लुक वेरी बिग टू अस. सो इट इज नॉट दैट इशू मे रिमेन द सेम, बट इट जस्ट दैट हम 125th फ्लोर पे खड़े होके, जैसे जब बुर्ज खलीफा जाते हैं, तो जब नीचे खड़े होते हैं तो वहां पे बहुत सारी टॉल बिल्डिंग्स है ना, बुर्ज खलीफा के आसपास बहुत टॉल बिल्डिंग्स है. तो जब नीचे से देखते हैं तो वो इतनी टॉल बिल्डिंग्स लगती हैं, ऐसा लगता है कि इनकी कौन सी वाली फ्लोर होगी, ऊपर दिखता भी नहीं है. यू रियली हैव टू क्रेन योर नेक हाई. ठीक है, लेकिन बुर्ज खलीफा में 125th फ्लोर तक जाने देते हैं ना लोगों को, और ऊपर भी जाने देते हैं. इफ यू टेक एन अपॉइंटमेंट टू गो एंड हैव अ कॉफी एंड अ क्रोसॉ,
up there, रेस्टोरेंट और भी ऊपर है, तो पर उसकी बहुत प्री अपॉइंटमेंट होती है, तो अगर आप वहां जा रहे हो तो और भी ऊपर चले जाते हो। तो जब आप इतना ऊपर जा रहे हो, उस रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल से जब आप नीचे देखते हो, तो जितनी भी एमआर वाली बिल्डिंग, EMAAR वाले बिल्डर्स है ना वहाँ पे, तो एमआर वाली जितनी भी बिल्डिंग्स नजर आती हैं वो मिनिएचर नजर आती हैं, जो नीचे से बहुत बड़ी दिख रही थी। Why? Because you have risen up. Now you're seeing all your relationship problems in this problem and money issue and this issue as tiny ants. They don't even look that big. They might be there, but you have risen up. Now that you've risen up, now what you see is that abundance that's surrounding you from that 128th floor. Okay. And that's who you become. And then you're not stooping down. Okay. So, and remaining in gratitude, remaining in love, that's what, and that's who we become, because we can see that abundance, we can feel that kind of an openness and luxury. So this is how life becomes, and this is how we capture the energy, the force of the universe into our own life, because we are the creators. So this chapter is about that, the magical air that you breathe. लेकिन इसमें हर एक चीज के लिए रोंडा बर्न ने बहुत अच्छे से समझाया है कि रियल गिफ्ट्स ऑफ नेचर के लिए जब आप थैंकफुल हो जाते हो, तो आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट लगती है आपको, एंड यू विल सी दैट abundance and that luxury and money and this and that will start flowing into your life. और फिर कल वाले चैप्टर में, टुमारोज चैप्टर में, you will start using that energy to heal people, to heal someone's money problem, to heal someone's relationship problem, to heal someone's health issues, to help facilitate getting someone else get a job, to facilitate someone. So you become a facilitator, because आपके पास वो पावर आ गई है, क्योंकि आपने इतना नेचर से कनेक्ट अपने आप को कर लिया है, that you have become one with the universe. So that is how this power comes. So now we'll read, and Ayan from Bangalore is reading for us today. The magical air that you breathe. हाँ जी Ayan, आप पढ़िए. Good morning, everyone. Good morning. थोड़ा सा loud. Am I Be audible closer to now? the device. It's okay, ma'am. Yeah, We yeah. want to see you also, Ayan. अयान, आप दिखा नहीं रहे हो, मैंने तो अपना वो बंद कर रखा होता है, बिकॉज स्क्रीन पूरा चाहिए होता है ना मुझको उस पे, तो मैंने अपनी वो फोटो वाला जो वो गैलरी होती है वो उसको हाइड कर लिया होता है, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा, तो प्लीज कैमरा ऑन करके पढ़िए. Next time चलेगा क्या, मैम? अच्छा. आप उतने ही हैंडसम हंक हैं अभी भी जितने आप अगली बार होंगे. Okay. So the image that we can see here is a beautiful tree. It's an expanse of the nature. I mean, like, it's not even, it does not even require explanation. It's an expanse of the nature, very, very expansive. And you can see the grass, you can see a lot of space above, you can see the earth, you can see the sunshine because bright hai, you can see the trees. And so all of this, so today is a day when we are saying thank you to the beautiful nature that's around us and that survives us, thrives us, flourishes us. Hanji. One sec. दिख रहा है ना screen बेटा? Yes, ma'am. Day 23, the magical air that you breathe. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted. Mary Ellen Chase, 1887-1973, educator and writer. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle for me. I went from sweating I went from sweating the small stuff in my life, in my little world and day to day life, to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe.
As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the Sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's there's a protective atmosphere surrounding us and that beyond it there's no air or oxygen. It's not an accident that uh, trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely to be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. When the realization hits you that all of these things might not be an accident and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today
And after you have taken each breath, and after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." And be as genuinely grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you're walking, waiting in the line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words, "thank you," as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in future by imagining your breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. In ancient teachings, it is said that when a person reaches a point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. The magic practice number 23. The magical air that you breathe. Point 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point 2. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths. Feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Point 3. After you have taken the 5 breaths, say the magic words, "Thank you for thank you for the magical air that I breathe." Be as grateful as you can for the precious, life-giving air. Point 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Yeah, thank you so much, Ayan. The one of Thank the you. smallest chapters of this book, but very, very significant. So this I had learned even from Abraham Hicks books, that whenever there is any issue going on in our life, when we are very disturbed emotionally, mentally, at that point of time, don't think about anything else, but just be grateful for the air, for the sunshine, for the grass, for the trees, for the flowers, for the nature, for the moon, for the stars, for the constellations, for the planets, so for the air. So this is what, and now we understand the deeper meaning behind it. Because when you become one with the universe, that force, everything becomes small for us, and we will see the solutions will appear without even trying hard. अपने आप ये सब कुछ आता है ना? बिकॉज कुछ कॉस्मिक फोर्स है, कुछ पावर है जिसके बारे में हमको अभी तक पता नहीं था, और वो हमारी एनर्जी के साथ अलाइन करना होता है हमको उसको. सो this is, I've always read it, this particular thing from all the Abraham Hicks teachings. Any video that you may have heard from Abraham Hicks, सब में यही है, that whenever you are disturbed, whenever there's anything going wrong in your life,
just be general and connect yourself to the things which don't have very big emotional reasons, you know, like the air. Air, anyhow, it is so expansive. मतलब थैंक यू अपने आप निकलेगा. सनशाइन के लिए थैंक यू में कोई इमोशनल टाइज नहीं है. सन ने कभी हमको वो नहीं किया है, यू नो, लाइक नेवर ट्रीटेड अस बैडली. So we don't have that emotional ties, you know, so to speak, with things which are more general and in abundance. So when we start saying thank you, जैसे इसमें end में लिखा हुआ है, you will become a true alchemist who can effortlessly turn anything into gold. That means कोई भी life की situation कैसी भी हो इस वक्त, you can effortlessly turn it into gold. And this is written in the ancient teachings, because in Rhonda Byrne's books, there was a, you know, like when she's writing this book, there was a proper research team जिनके नाम लेके उन्होंने बताया भी है. So ये वाला paragraph है. That's why I've highlighted this in yellow. And this says, in ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. So we are here to actually transform every part of our life into gold, and it will be done effortlessly. So why not just say thank you to the air every day? Why not celebrate the sunset every day? So this is how, when we get connected to nature, say thank you to the seas and oceans. Agar people who are in North India, we don't have seas and oceans near our houses, nowhere close also. Okay, but then we do have pictures. We do have photographs. We do have YouTube videos of the sea. We have on Instagram, we have beautiful seas and oceans. So we can say thank you to them, right? I mean, like in your mind, you can create. कहते हैं ना, imagination is the true magic carpet. So imagination में आप किसी भी country के बीच पे जा सकते हो और वहां पे thank you बोल सकते हो. Imagination में ही सारा. Because it's not about the technicality of doing the practice. It is about the amount of gratitude that you can generate from your own life. And it's just about that. And Rhonda Byrne ने इसमें लिखा हुआ है, because ये सारी जनरल चीजें होती है ना, तो हो सकता है शुरू में दिल से थैंक यू नहीं निकले, तो इसीलिए उन्होंने लिखा है deliberately, word she has used in this chapter, that deliberately say thank you to the beautiful nature, to the dewdrops on the grass, to the trees, to the plants, to people, to the planet Earth. So there's so much that we get, and everything was orchestrated by the universe, by God, that we say, to survive all of us, isn't it? ऑक्सीजन वहीं तक है ना जहां तक ह्यूमन बीइंग्स रह सकते हैं. जैसे ह्यूमन बॉडी उस तरह की बनी हुई है, हमारा अपना एक थर्मोस्टैट होता है बॉडी के अंदर जो एक लेवल तक कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर ले सकता है. सो ह्यूमन लाइफ वहीं पे होगी जहां तक हमारी बॉडी उस कोल्ड को एंड्योर कर सकती है. लाइक हिमालयस के ऊपर भी जब जाते हैं तो हमें अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं. इवन द आई वाटर्स फ्रीज देयर, सो यू हैव टू अप्लाई, यू नो, लाइक वेयर like something like a helmet. You have to wear there so that your eyes water is also not exposed, because minus 35-40 degrees temperature hota hai wahan pe. So then human life there is not possible na, wahan logon ke ghar nahi honge. So the way God has created this beautiful planet Earth, the distance between the sun and the earth, the distance between the sun and the moon, the distance of earth to the other planets, जो बाकी के 9 ग्रह होते हैं उनके साथ जो distance है वो कितना well placed है. And according to Einstein, जिन्होंने बहुत सारे experiments and discoveries किया था, तो वो भी ये कहते थे कि अगर 0.1 मिलीमीटर का भी अगर डिफरेंस आता है ना सन और अर्थ में, तो ह्यूमन लाइफ बहुत टफ हो जाती अर्थ के ऊपर. So everything is so perfectly placed. Who's done that? The force of the universe that we are aligning with. Imagine, you know, like all of each of us individually, we are aligning with that force which has created the sun, the moon, the planet Earth, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, constellation, Neptune, Pluto. Take care, the oceans, the seas, the earth, the grass, the trees, the jungles which are there. So everything was already created कि भाई ये सब सेटिंग हो गई है, अब ह्यूमन बीइंग्स को इस धरती पे लेके आओ, अब वो बहुत आराम से रह सकते हैं वहां पे और उनकी लाइफ बहुत हेल्दी होगी.
ठीक है, लेकिन हम इतने कंज्यूम्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ के छोटे छोटे पचड़ों में कि हम ये जो रियल गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, जैसे रोंडा बर्न ने इसको ही बोला है ना, दैट व्हेन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द रियल गिफ्ट्स ऑफ नेचर, योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म. You will see that things in your life, money will start coming in, health will get better. What is health? Oxygenation only, है ना. मैंने आपको बहुत पहले एक बार बताया था कि जो ब्राजील में जो वो जगह है, इट इज लाइक अ रिजॉर्ट. वहां पे जब जैसे स्टेज 4 कैंसर किसी को है या कोई टर्मिनल इलनेसेस बाकी की होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, वेर एवरीबडी, इवन द डॉक्टर्स हैव क्लोज द डोर्स कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो वहां पे जाके रहते हैं उस ब्राजील के उस छोटे से रिजॉर्ट में. और वो थोड़ा शहर से दूर बना हुआ है. और वहां पे क्या ट्रीटमेंट क्या होता है पता है आपको? नेचर में वॉक करना, थैंक यू बोलना, और एक जगह बैठ के बहुत मतलब डीप ब्रीदिंग करना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सो द ट्रीटमेंट इज डन बाय ऑक्सीजनेशन. दैट्स इट. देयर इज नो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अदर देन दिस. सांसें लेना और सांसें छोड़ना. ठीक है. और वहां पे कोई फोन वोन यूज करना अलाउड नहीं है. तो आप बाहर की दुनिया की इंफॉर्मेशन आपके अंदर आती नहीं है. हमारी आधी तबीयत तो इसलिए खराब होती है क्योंकि हम बहुत इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, न्यूज देखते हैं और स्कैरी मूवीज देखते हैं, मर्डर मिस्ट्रीज देखते हैं, क्राइम थ्रिलर्स देखते हैं और बहुत खुश होते हैं. ठीक है. वो तो किसी ने कहानी लिखी हुई है और वो कंटेंट नहीं होता है ना उस ब्राजील के रिजॉर्ट में. तो वो कंटेंट नहीं है, तो हम अपनी ही लाइफ को वो ब्राजील का रिजॉर्ट नहीं बना सकते जहां पे हम वो कंटेंट कंज्यूम नहीं करें. और अगर हमको पता भी लगता है, अगर कोई हमको बताता है अरे कल वो हो गया, ये हो गया वहां पे, इमिजिएटली हमारी हमारी लाइफ से उस चीज के लिए ब्लेसिंग निकलनी चाहिए. और वो ब्लेसिंग निकलेगी तो वो कंटेंट ऑटोमेटिकली हम कंज्यूम नहीं कर रहे, रादर हम अपनी लाइफ से ब्लेसिंग निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन या इवेंट के लिए जहां पे भी हमें पता लगता है कि समथिंग रॉन्ग एंड हैपन. और दिल से प्रे करेंगे, दिल से, दैट यूनिवर्स यू आर देयर एज अ क्रिएटर, please create a beautiful life for all those people who were there at that place so that they can enjoy the best of life and their life will turn around. So this is what we can do. हम डेप्थ ऑफ फीलिंग के साथ उनको ब्लेस कर सकते हैं. खत्म हो गया. तो वहां पे बस यही होता है, गहरी लंबी सांसें लो और गहरी लंबी सांसें छोड़ो और नेचर में वॉक करो, नेचर से कनेक्टेड रहो. So this is how life is all about. So recently when we were in Goa, we also visited a place. I think वो ब्राजील वाली जगह मेरे दिमाग में ही रह गई थी. And like this universe recreated that place for us. And if Poonam and Meena are there, they know we went to a place called Mojigao in Goa. It's a must stay for everybody, even if it is expensive. I mean, right now it's not expensive. It's just for 9,000 plus taxes or something. It is exactly like that. Like I had that image because मैं क्योंकि healthcare sector में हूँ, and that we do heal people. So that stayed in my head. और वो जो image थी ना जो मेरे दिमाग में थी उस ब्राजील के रिजॉर्ट की, वो exactly image recreate हुई when 3 of us visited Mojigao in Goa, right in the heart of Goa. Okay, it's not away, but वो थोड़ा सा बीच में ही एक जगह है, like a jungle. वहां पे जाके they have rooms as well. हम तो वहां पे ब्रंच करने के लिए गए थे. It is surrounded by trees and nature. जो उनका जिम है ना, वो भी वैसा है जो रस्सियां जूट की बनी हुई होती है उससे हैंग कर रहे हो, या फिर अगर आर्म्स वर्कआउट करना है तो वो भी नेचुरल चीजों से बना हुआ है, तो उसका नाम ही जंगल जिम है. और वहां पे झूले लगे हुए हैं जूट के, जिन जिन पे पूनम ने बहुत मजे किए हैं. वहीं से मैंने वो वाला शॉर्ट वीडियो बनाया था अबाउट द 555 टेक्निक जो हमने की थी बिफोर वी वेंट टू गोवा. एंड एवरीथिंग देयर, वहां पे योगा सेंटर है और बहुत नेचुरल हैबिटेट में है. और अगर रूम तक भी जाना है आपको रेस्टोरेंट से, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट दैट टॉल ट्रीज, और बीच में छोटा सा रास्ता है और रूम्स बने हुए हैं. वो रूम्स भी इतने ऑर्गेनिक है, मतलब मजा आ गया उस जगह पे जाके. एंड देन वी डिसाइडेड दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग एंड स्टेइंग देयर नेक्स्ट टाइम, एटलीस्ट फॉर अ नाइट इफ नॉट थ्रू आउट. It was so beautiful, so much full of oxygen. I mean, our skin was radiant when we actually came back from Goa. There was so much of oxygen, so much nature. I mean, every view was like, wow. So that is what we need to realize, that itna sara kuch hai hamare liye, the real gifts of nature. और जब हम उसको thank you बोल देते हैं, we become an alchemist. Okay, and then you can effortlessly, I have to use that word because it's written here,
effortlessly turn every part or any part of your life into gold. अगर आपको अभी हेल्थ में इशू चल रहा है, so by taking in, by appreciating the air, by blessing the air, and by when you are breathing the air in, when you say thank you, you're naturally connected to the force of the universe. That air is coming because of the sun moon distance, because of the sun earth distance, because of the trees which are there. The trees are grown on the earth, so there is planet earth, mother earth, which is there. It is there in the space because oxygen तो space में आती है, वहां से हमारे पास आती है, तो space के लिए thank you हो जाता है. सन के लिए या फायर एलिमेंट के लिए तो थैंक यू हो ही जाएगा ना, बिकॉज अगर सन नहीं निकलता है तो ट्रीज में से ऑक्सीजन नहीं निकल पाती है. सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल बनता है और ऑक्सीजन बनती है. क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट देगा उस प्लांट को और उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ये नहीं हो पाता अगर सनलाइट नहीं, अगर फायर एलिमेंट का कोई रोल ना हो तो. सो व्हेन द सन शाइन्स, दैट्स व्हेन द ऑक्सीजन गेट्स प्रोड्यूस्ड. Okay, so there are all the elements, are already covered. So it is like saying thank you to all the nature and the natural elements which are there, because of which we have life today. So अपने प्राण के लिए, अपनी life के लिए, if we cannot say thank you, I mean this is the least we can do, like to say thank you to the real gifts of nature. And Rhonda Byrne कहती हैं कि जब उन्होंने रियल गिफ्ट्स ऑफ नेचर के लिए थैंक यू बोलना शुरू किया तो उनकी लाइफ में material luxuries की abundance आने लग गई. All that car and house and this and money and whatever it was, वो सारी चीजें उनकी जिंदगी में आ गई. जब तक वो उनको चेस कर रही थी तब तक वो इतनी नहीं आई थी. लेकिन जब वो रियल गिफ्ट्स ऑफ नेचर को जब उन्होंने थैंक यू बोलना शुरू किया तो उनकी लाइफ में मटीरियल चीजें भी अट्रैक्ट होने लगी. दिस इज व्हाट शी इज रिटन अप देयर इन दिस चैप्टर इफ यू वर रीडिंग इट केयरफुली. सो दिस इज द पावर, द फोर्स of our connection to the nature. This is the reason I always tell you that when you go out, at least 5 trees ko thank you, I love you bolo. 5 different flowers ko thank you, I love you bolo. Whatever, even if it is the grass, even if it is like the wild grass, it is just all right. That's also emanating oxygen there. Okay, so usko thank you bolna. हर एक चीज जो आपको नेचर की, सनशाइन, सनराइज, सनसेट, सेलिब्रेट सनसेट. सो हमने जाने के पहले मैंने पूनम और मीना को कहा था कि आई हैड अ सरप्राइज फॉर देम, बिकॉज हमने उनको, आई वांटेड टू ट्रीट देम फॉर डिनर इन सनसेट एट तिराकुल फोर्ट एंड आई डिडंट वांट टू टेल देम दैट. So just telling that, because we every day celebrated sunset, every day. I mean, like dressing up, going, celebrating like that. Even the day we had a flight back in the night, in the evening, we did not leave before the sunset, before celebrating the sunset. So celebrate life, nature, and then life celebrates you. And just wait for those mysteries to unravel before your eyes. Everything, life will keep bringing in beautiful mysteries, and you'll actually think that ye kaise ho gaya, but ho jata hai because you were connected to the higher things in life. So when you are in that alignment, you just have to wait and watch how beautiful life unravels. So today's practice is about celebrating our life by appreciating the air that we breathe that keeps us alive. Okay, so उसमें करना क्या है, because body 5 elements की बनी हुई होती है ना. So इसलिए हम 5 different times of the day, that number 5 has got a significance because the nature has 5 elements, है ना. Earth, water, fire, air and space. Space को ether भी बोलते हैं. So ये 5 elements है, body में भी 5 elements होते हैं. So we are aligning the outside 5 element forces with the body, with our body, with our life. So 5 different times of the day, 5 times हर एक बार हमको breathe in और breathe out करना है, and feel the feeling of the air going inside and feel the joy of giving it out. मतलब हमेशा लेने से ज्यादा आप देने में खुशी महसूस करो. Okay, जैसे लिखा है, feel the feeling of the air going inside and feel the joy of giving out, giving the air out. So वो 1 हो गया, like अभी 1 inhalation, 2nd inhalation, then exhalation, sorry, then 2nd time inhalation and then exhalation. So ऐसे 5 बार. So it will be 5 into 5. Okay, at one time 5 times breathe in, breathe air, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, like that 5 times. और हर बार जब आपका पूरा सेट कंप्लीट हो जाता है 5 का, जैसे अगर मॉर्निंग में आप कर रहे हो तो आपने 5 ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट्स कर लिए, उसके बाद एंड में बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ एंड से थैंक यू टू द नेचर.
जितनी ज्यादा डेप्थ में आप बोल सकते हो, है ना। अब तो सिर्फ टेक्निकली मैकेनिकली हम प्रैक्टिसेस नहीं करते ना, अब तो वी जेन्युइनली लव द नेचर, राइट। सो say thank you to the trees, to the plants, to the fire element, to the sun, to the beautiful sunshine, to the nice moon that comes in the night, etc., etc., to all the constellations and planets. Okay, the best way to make your own destiny and not be dependent on the astrology. Okay, astrological charts might be predicting, but you are the creator, so you don't have to worry about it. So that's how it is like, right? When you say thank you to all the Rahu, Ketu, Sun, Moon, Jupiter, Saturn, can they be mean to us? Can they do us any harm? Right? Can they bring miseries to us? No. If you appreciate anything, they will bow down. It is written in the scripts that all the 9 planets, जो जिनके कारण हम astrology chart बनाते हैं, they bow down to us when you say thank you to them. They will never oppose us. They will always be your best friends. They will be your allies. They will propel you, push you, further in life and give you the beautiful life. So don't worry about that. They might be, they're mathematical predictions, okay? You can't change that. That's okay. But you are the creators. And all biggest of the biggest saints and the most learned people, whether they were scientists, whether they were whosoever, they have all mentioned that a human being is his own creator. Okay, so we are not going to negate that fact, no? So we are the creators. So don't get bogged down अगर astrology में किसी ने बोला है कि शनि चल रहा है, वो चल रहा है, उसकी महादशा है ये. Don't worry about it. They are mathematical predictions, but creation is happening from the human life only, full stop. Okay, so this is what the assignment is all about. Morning, counting my blessings. We've already written our 10 beautiful blessings that we are enjoying in our life. And after that, 5 different times of the day. अगर आप भूल जाते हो तो आप अलार्म लगा लेना, ठीक है। हर 3 घंटे के बाद का अलार्म लगा लेना। अभी सेशन के बाद पहली प्रैक्टिस कर लेना। 5 टाइम्स कुछ नहीं करना, जहां पे बैठे हो वहीं पे बैठ करके ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लो अटेंशन के साथ. डोंट ट्राई टू डू इट राइट नाउ, ओके, बिकॉज focus on one thing at a time. Give your 100% to that thing that you're doing. Okay, so that way. But आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या बोल रहा है, म्यूजिक चल रहा है. You should be so involved in where you are and what you're doing right now. That's very important. So after the session, पहली बार कर लेना, then put an alarm of 11 o'clock, then put an alarm of 2, then 5, and then 8. And it's done. ठीक है. So that is what. And feel real gratitude. तो इसमें लिखा हुआ है ये नहीं कि मैं सांसें धीरे लेनी है, मैं सांसें तेज लूं क्या, मैं कैसे सांस लूं. रॉन्डा बर्न ने वो भी क्लैरिफाई कर दिया. उनको पता है ना हम कैसे सोचते हैं, तो ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि ये इस पे मत जाओ कि सांसें तेज लेनी है, आवाज के साथ करनी है, स्लो ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग. इट इज द अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट यू आर गिविंग. इट इज नॉट अबाउट द टेक्निकलिटी एंड मैकेनिकल वे ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. ठीक है. सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे. 5 different times, each time 5 times, and then in the end saying thank you for the magical air that I breathe, and say thank you to all the 5 elements and all the 9 planets, stars, constellations, sun, moon, everything. Okay, and we are coming to a very beautiful day of bringing this beautiful year to an end. I think tomorrow is the last day of this year, and it's a very huge significance because the earth would be completing one entire cycle, that circle round the sun. So it is a beautiful day of very amazingly new beginnings that are going to come to your life. ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है कि हम पूरा अर्थ का एक चक्कर देख पाए, एंड वी सर्वाइव्ड इट सो नाइसली, एंड वी हैव ग्रोन इन दैट व्हेन द अर्थ वाज टेकिंग अ राउंड द सन. Okay, we were enjoying our beautiful year, and then another fresh circle will start from 1st of January रात को 12 बजे, है ना. अर्थ दोबारा से उस पॉइंट पे आ जाएगी और दोबारा से मूवमेंट शुरू करेगी. अर्थ मूव कर रही है, सन अपनी जगह पे रिवॉल्व हो रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं, हमें भी तो मूव करना है और ग्रो करना है, और बहुत ज्यादा. और सन और मून के साथ साथ, बिकॉज दे बोथ आर मूविंग, ऑल द 9 planets are moving, we cannot be stuck. Okay, so we will decide how we have to grow, because the energy of making a determination of how we want to grow and where do we want to see ourselves as, that will get merged with that movement, and then watch what happens. Okay, so this is the practice for today. 5 times breathing, 5 different times of the day,
Morning, count my blessings. If you've not done, do it diligently. And in the night, it is the magic rock where you hold that stone in your hand and you feel very, very grateful and happy about so many things that happen during the day. छोटी छोटी चीजें, ठीक है? और आप thank you बोल के सो जाओ. So that is the practice. We are here to turn. So आज हम alchemist बन जाएंगे और कल फिर हम magic wand practice करेंगे because हमारे पास वो power आ जाएगी जिससे हम जादू की छड़ी बन जाएंगे, magic wand, and then we'll use that जादू की छड़ी on people who need it most every day. Every day we should be using that. So now we go to the other book, which is The Hero, again by Rhonda Byrne. And where we are starting a new topic called One Step at a Time. है ना? कभी भी हम सबके एक मंजिल है जहाँ पे हमको पहुंचना है. हम लोगों को, कुछ लोगों को जो भी हमारी ड्रीम गोल था, है ना? हमने तो अपनी ड्रीम लिस्ट बहुत ही विविडली बनाई हुई है. उस पे हमने कल वर्क भी किया था, रिवाइज भी किया था, रीड किया था, सब कुछ. तो अब वो हमको पता है कि हमको ये है हर महीने कितना पैसा कमाना है, हर महीने, और ये या हमारा बिजनेस गोल क्या है, or whatever it is, what kind of a body weight do we want, or we want to buy a house, it could be that, or no matter whatever it is, हम सबके अलग अलग goals हैं. उस पे तो हमने बहुत अच्छे से work कर ही दिया है. So now this book and this topic is going to tell us that how do we go, like, you know, that manzil might be very far. Maybe today you're earning 1 lakh rupees, but you've written that you want like 25 every month. So, but then how do we go towards, how do we go ahead with that kind of a goal? So that's what it is about, one step at a time. So yes, Suman, I'm so happy you're reading. Please read for Good us. morning. Good morning, ma'am. Good morning, Good everyone. morning. Can you hear me? Absolutely, loud and clear. Perfect. Can I start? Yeah, please do. Yeah. One step at a time. Along your journey, remind yourself that one step at a time is all you need to take. One step at a time is all you can ever take. And no matter where you find yourself or in what situation, you can always take one step. You can make yourself feel overwhelmed if you let your mind get carried away with all of the possibilities of what could be ahead. The path to your dream will never unfold in the way you think anyway. So just keep bringing yourself back to one step at a time. Those words helped me enormously when we were making the secret film. When my dream seemed to be going way off the path that my human mind thought it should take, I brought myself to just taking the next step. And by taking one step at a time, my dream came true. Yeah, so this makes it so easy that you have your goal from here till there. बहुत लंबी bridge है उसके बीच में, क्योंकि goal, we've always learned how to dream big. So many of us have already achieved our dreams और हमने next dream list बना ली है. So how did this happen? एकदम से तो आज नहीं हो सकता ना. अगर आज हमने ड्रीम लिस्ट बनाई है, we are visualizing, we are saying thank you, we are living a beautiful life, हम अपने आप को बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में रख रहे हैं. So but then what is it that you can do today is just take that next step. You don't have to, you know, kind of break the wall and say that why is it not happening? No, whatever it is जो हमने कल पढ़ा था ना, that with whatever you have right now, just take that one step. We don't have to fret and fume about the, you know, that कैसे बन जाएगी. जैसे सीक्रेट मूवी के बारे में इन्होंने बताया कि इनको ये मूवी बनानी थी और सीक्रेट मूवी पहले बनी थी and then she wrote the book. So जब मूवी बना रही थी, पैसा नहीं था, ये नहीं था, तो उनको यही लग रहा था कि चलो क्रेडिट कार्ड तो है ना मेरे पास. तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड से डेट लेके, मतलब वो उसमें तभी 2 मिलियन उसी में से लिए थे मूवी बनाने के लिए. तो उन्होंने उसमें से पैसे निकाल के she took the next step. She was not waiting for the loan to approve, you know, because वो अमेरिका में बन रही थी, वो ऑस्ट्रेलियन नेटिव हैं, तो वो सारे भी ट्रांजैक्शनल इश्यूज होते हैं ना कि एक ऑस्ट्रेलियन नेटिव को पासपोर्ट होल्डर है वहाँ की, शी इज नॉट द नेटिव ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका में कैसे लोन मिल जाएगा, और यहाँ पे सारा काम हो रहा है तो वहाँ पे लोन नहीं अप्रूव, मतलब बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे उनके. But ठीक है, she just took the next step. That's it. So what is it that I can do? Sometimes in life you have to take a step back. You know, step back as in dreams and goals के मामले में नहीं. Just stay silent and stay still. There are times in life when you just need to stay still.
when you don't know that things are not moving, just surrender. That's what is called stay still. Just surrender that this is my goal. This is what I need to do. And I am looking for help from the universe. And my supply is the universe. And I don't have to worry about anything. And then when you have that kind of a surrender, you are in that still moment and some help will come to you. Something will happen and things will start moving forward. This is the belief and faith in the higher power. It is always working in our favor. Forward, forward, forward. Okay? It's only human mind which is pulling us back. Our mind which is pulling us back in life. Okay? So sometimes we don't need to use the brain too much because there are things that are only, like I told you, that Abraham Hicks बोलती है कि अगर आप एरियल व्यू लोगे तो आप देखोगे कि कितनी सुंदर रास्ते आपके लिए गोल्डन पाथ क्रिएटेड है, गोल्डन पाथ क्रिएटेड है और उस पे ही हमको चलना है. तो ठीक है, उस वक्त कभी कभी होता है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें. ओ बट लाइफ इज ओनली ब्यूटिफुल. ऐसा हो ही नहीं सकता बाय द लॉ ऑफ द यूनिवर्स दैट यू से थैंक यू फॉर समथिंग, thank you for nothing. You're just saying thank you, thank you, thank you. You're not even saying thank you to something. You're just saying thank you. ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ द यूनिवर्स के हिसाब से योर लाइफ हैज टू गो फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड. देयर इज नो वे दैट यू कैन रिसीड or you can fail in any attempt that you're trying to make. There is no way. It is a law, whether we believe it or not believe it. Okay, this is the reason sometimes I tell you that when you're very, very boggled and hassled about something and very, very frazzled and you don't know what is the next step to take, I just tell you, what is it that you can do right now? Just write 100 thank yous or do your Ho'oponopono. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. और जस्ट राइट थैंक यू 100 टाइम्स. नहीं दिमाग चल रहा, बहुत परेशान हो, कुछ रास्ता नहीं समझ आ रहा, ठीक है, उस वक्त मुंह मत खोलना कभी भी उस टाइम. ठीक है, मुंह खोल दिया तो आपके मुंह से कभी भी अच्छी चीज नहीं निकलेगी. और इमोशंस में शब्दों की पावर बहुत पावरफुल होती है. वो बहुत जल्दी रियलिटी बन जाते हैं. कभी भी इमोशन में अगर आप कुछ बोल देते हो, गुस्से में आके कुछ बोल देते हो, वो कभी भी आप उस क्रैक को इरेज नहीं कर, उस चीज को इरेज नहीं कर सकते. इट मेक्स अ क्रैक. ओके, सो दिस इज समथिंग वी नीड टू लर्न. इसीलिए तो हमारी लाइफ इतनी खराब हो मतलब कई बार हुई है, क्योंकि हमने गुस्से में ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले होंगे या मन में थॉट्स क्रिएट किए होंगे विच आर नॉट समथिंग दैट वी वुड लाइक टू सी इन आवर लाइफ. We don't want to see all that happen. But then now we have to be a little more mindful because now we know how it works. We know the power of words. Words are very, very powerful. मैंने बहुत किताबें power of words पे पढ़ी हुई है. मैंने बहुत experiences सुने हुए हैं कि कैसे उन्होंने emotions में आके कोई चीज बोल दी और वो हो गया. ठीक है, बुरी चीजें भी सुनी है और अच्छी चीजें भी सुनी है. कि मजाक मजाक में कहते हैं ना, मजाक में भी कभी ऐसी चीज मत बोलो जो आपको देखनी नहीं है, क्योंकि मजाक एक हाइटेंड इमोशनैलिटी होती है. ठीक है, मतलब उस वक्त आप यू आर इन दैट थ्रिल मोमेंट और वट एवर यू कुड से, और उसमें भी अगर आप मजाक में कुछ बोल दो कि ऐसी चीज जो विच इज नॉट दैट ग्रेट, और वो चीज हकीकत बन जाती है. सो इसीलिए इन हाइटेंड इमोशनैलिटी, choose your words carefully. Spoken words are never going to come back. Okay, and you will see it happen before your eyes. So we don't want that to happen. So just take that one step at a time and be careful about the words that you utter from the mouth. Okay, they are very, very, especially गुस्से में मुंह पे टेप लगा लो बस. ठीक है, उल्टी गिनती कहते हैं ना, बैकवर्ड काउंटिंग करो, इसीलिए बोला जाता है बैकवर्ड काउंटिंग करो. उतनी देर में जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है एड्रीनलिन, वो थोड़ा कम हो जाता है जब बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, और उसके बाद दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा, है ना. फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में आप कोई भी एक्शन मत लो, कोई डिसीजन मत करो और कोई वर्ड मत बोलो. जस्ट बी इन दैट थैंक यू जोन, राइट इट. I know these basic little issues that happens with us, where all of us get boggled down sometimes when things are not going our way, or we are emotionally very, very low in some days. Okay, so this is what we need to do. We just thank you for no reason. That is the biggest step you can take. It will be like a leap that will take you from where you are to where you want to be. It's the biggest leap towards in the direction of your dreams or in the direction of a beautiful life. Hanji.
Liz Murray. If you think you can see every step, you are mistaken. That's the mistake we make, thinking we need to, or even that we could control everything. My mother went to Narcotics Anonymous, and all these people do the serenity prayer. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. And that is everything. I couldn't bring my mother back. I could not change my father's HIV diagnosis. I couldn't control the weather. You could make a list of all the things you can't control. And if you put your energy into those, it'll go to the wind. Instead, you say, okay, what can I do? Yeah, so it's so clear to us. This is a prayer, serenity prayer, that it is that God grant me the serenity to accept the things I cannot change. So पहले कबूल करो, उसके बाद आप courage के लिए God से pray करो that give me the courage to change the things I can. Okay, so पहले accept करो कि ठीक है जो है वो हो गया. Don't curse the problems ever. Okay, everything in life happens for a reason. Even the problems have come in our life because we had to grow the most. People who have most problems are the people who grow the most. It is as simple as that, है ना? Distance बहुत लंबा होगा ना उनके growth का, क्योंकि बहुत scope है grow करने का, क्योंकि maybe they are at -100 today, but they will go at +1000. So they're scaling a lot of distance and going up in the life and upwards and onwards and going ahead. Okay? So never curse your situation. Always embrace it with a lot of dignity and pride, and then ask for the courage to change that thing. That thank you universe, that this particular thing, जो भी चीज आप देखना चाहते हो आप वो बोल दो. That is it, and the wisdom to know the difference, that what you should not see and what you should do, because you have to have the wisdom to do the things also. And that's about it. So this is what Liz Murray says, that my mother had passed away. I could not bring her back because वो इतना बहुत ज्यादा ड्रिंक करती थी, तो वो और ड्रग्स पे होती थी, तो इसीलिए नारकोटिक्स एनोनिमस में उनको ले जाना पड़ता था बार बार, क्योंकि वहाँ काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वहाँ लोग एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, फ्रॉम द सिमिलर बैकग्राउंड. और उनके फादर को HIV था, सो शी वुड नॉट चेंज बोथ दीज थिंग्स ना, बट उनके दिमाग में ये था दैट शी वांट्स टू बिकम द एस एंड द लीडर. And that is how beautiful it was. And then she says that you can't control the weather, you can't control things outside sometimes. और ये भी उन्होंने बताया है जो हम पढ़ रहे हैं इतने टाइम से, that wherever you put your energy, focus and attention, that thing will magnify in the life. What is the point of putting attention to the miseries of problems and etc etc? There is no point putting attention into those areas of the life. सो कहती हैं क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपना अटेंशन उस पर दूंगी कि वेदर भी खराब है, मेरे फादर भी ऐसे हैं, ये भी ऐसा है, दैट मीन्स यूर ब्रिंगिंग मोर ऑफ दोज मिजरीज इनटू योर लाइफ. जितना ज्यादा अटेंशन प्रॉब्लम्स पे फोकस रहेगा तो प्रॉब्लम्स एम्पलीफाई होंगी, दे विल बिकम लाइक अ वाइल्ड फायर. वी डोंट वांट दैट टू हैपन. That's why we've heard this term be solution oriented and think more about the solution. Think more about what is the next step. Think more about what kind of a life do you want to see. Think more about what is it that you can do right now at this moment. And that's it. Hanji. Michael Acton Smith. I have been taking one step at a time and occasionally step backward or hit dead ends. But as long as you've got that big vision in mind and you believe you will get there, eventually you do. And just like being in a labyrinth, one day you turn a corner and suddenly you have arrived. Just like that, your dream has come true. Once you have achieved your dream and you are looking back on the journey you took, you will realize that every wall forced you to take an alternate path, which led you not only to your dream, but often a far better version of your dream than you ever thought was possible. In fact, there are no walls,
There is only the appearance of walls. There are no dead ends. There is only the appearance of dead ends. Both are actually only detours from the purpose of redirecting you to the greater version of your dream. Yeah, so I hope we believe this that problems नहीं होती लाइफ में, वो अपीयर हो रही है. लोग नहीं होते जो हमको ओपोज कर रहे हैं या कोई ऐसा है. They are just there because universe wants us to take a detour. Okay, it is just about that. We will never become big in our career if something in the current situation does not happen, which is not our way. Okay, when something happens जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स इंसान नहीं है कि वो धरती पे उतर के आके बोले कि आप यहाँ नहीं है, आपका रास्ता वो वाला है, उस पे चलिए, आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, है ना. कोई आके यूनिवर्स आके नहीं बोल सकते ऐसे हमको. सो ये हमको ऑटोमेटिकली जो करंट सिचुएशन है उससे बाहर निकाल के हम ऑटोमेटिकली उस रास्ते पे चलने लग जाएंगे. अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन ब्रेन उस वक्त लगेगा कि क्योंकि हम सब अपने कंफर्ट जोन में बहुत इजीली ट्रैप हो जाते हैं, फिर हमको लगता है चलो यही लाइफ है, मस्त है, जैसा चल रहा है ठीक है. ठीक है, सो ग्रोथ का स्कोप नहीं होता क्योंकि कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा ट्रैप्ड रहते हैं. दिस इज हु आई एम, दिस इज द काइंड ऑफ फूड दैट आई लाइक, आई एम लाइक दिस ओनली. नो, नोबडी इज लाइक दिस. यू आर हियर टू ग्रो एंड एक्सपैंड. Please change yourself and grow more. While the core of you have that compassion inside of you, but it's not coming around, na? तो फायदा क्या है उसका. So we are all here to grow as a person. We are all here to improve our communication. We are all here to learn different languages and develop a fluency in the language that we speak. We are all here to learn, get more knowledge. We are all here to expand our dreams. We are all here to get out of the comfort zone and do the things that we've never done before. जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा की सारी किताबों में लिखा हुआ है, स्टेप आउट फ्रॉम द नोन इनटू द अननोन. ओके, जब तक वो करेज नहीं आएगा ना, तब तक ड्रीम्स नहीं अचीव होती है. अगर कंफर्ट जोन में अभी है दैट ठीक है, मैं आधे घंटे के लिए सुबह उठ के वॉक कर सकती हूँ, मैं 5:30 बजे के पहले नहीं उठ सकती, change yourself, start sleeping early. Breaking the patterns in life is what brings you success. This has been my individual story throughout, personal story. ब्रेक द पैटर्न्स. किसी भी चीज में अगर आपका पैटर्न बनता जा रहा है ना, एंगर का पैटर्न या कोई भी चीज वो सेट तरीके से करते जा रहे हो, वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही, यू सीज टू ग्रो. यू दैट मीन्स यू आर ट्रैप्ड इन योर कंफर्ट जोन, है ना. सो इन चीजों से करना, तभी टू ब्रेक द पैटर्न्स. ब्रेकिंग द पैटर्न की वजह से क्या होगा कि हम अपना राइट साइड ऑफ द ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे, जो क्रिएशन का ब्रेन होता है. आपको याद है मैंने कुछ दिनों के पहले आपको बताया था दैट थोड़ा थोड़ा ना लेफ्ट हैंड, अगर जो राइटीज है वो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो. क्योंकि अयान ने शायद एक वीडियो भेजा था जिसमें था कि जब आप सुबह ब्रश करते हो शीशे के सामने खड़े होके, तो हम जनरली जो राइटीज होते हैं वो राइट हैंड से ब्रश करते हैं, जो लेफ्टीज होते हैं वो लेफ्ट हैंड से ब्रश करते हैं. तो उसमें उन्होंने बताया था दैट पर्सन दैट स्टार्ट डूइंग दिस, दैट आप राइट मतलब अगर राइट हैंड आप नॉर्मली यूज करते हो तो आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू करो. फिर मैंने कहा था कि चलो ब्रश करते वक्त हो सकता है भूल जाएंगे या जो भी हो जाएगा, बट जब आप थैंक यू लिखते हो तो कम से कम 1 2 3 सेंटेंस कोशिश करो कि आप अपने लेफ्ट हैंड से लिख पाओ. आप देखना है कि मसल्स डेवलप होने लग जाएंगी और आपकी राइटिंग अच्छी होने लग जाएगी एंड कंफर्ट स्पेस में आ जाओगे. मैंने एक दिन 100 थैंक यू लिख रही थी, सिर्फ थैंक यू. सो 12 से लेके 65 तक मैंने अपने लेफ्ट हैंड से लिखे थे. शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज वो ग्रिप नहीं आ रही थी, बिकॉज फाइन मोटर मूवमेंट्स नहीं होते ना लेफ्ट मसल्स में, लेफ्ट हैंड के मसल्स में, क्योंकि हमने कभी उसको उस तरह से यूज नहीं किया है. सो अब देन आई रोट, उसके बाद इतना स्मूथ हो गया था एंड फास्ट स्पीड हो गई थी. सो ऑफ कोर्स आई स्टिल डोंट ब्रश विद माय लेफ्ट हैंड, बट आई हैव स्टार्टेड राइटिंग सिंस देन टिल नाउ आई एम राइटिंग. अब उसकी वजह से क्या होगा, हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी हमारा राइट ब्रेन कंट्रोल करता है, ऑपोजिट क्रिस क्रॉस होते हैं. राइट ब्रेन हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है. और हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन हमारा क्रिएशन का ब्रेन होता है. लेफ्ट साइड इज ट्रैप्ड इन कंफर्ट जोन. मैं ऐसी हूँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मेरे बस की नहीं है, मुझे रोने की आदत है, मुझे अपनी कंप्लेनिंग की आदत है, मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसा ही खाना अच्छा लगता है, मैं ऐसी हूँ.
ठीक है, वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है. राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है क्रिएशन. आई हैव टू चेंज माई बॉडी वेट, आई हैव टू ग्रो मोर, आई हैव टू स्टार्ट रीडिंग 3 pages of the new book, I have to do this, I have to write 100 blessings, I will write this, I will do this, I will ensure that I'm trying to eat healthier day by day. I will eat junk food only once in a week. I will drink so much of water. This is what I need to do. I will try to think that what is it that I can add to my work profile, like और क्या कर सकते हो, how I can add value in my own life, what is it that I'm going to do, how I will write, how I will think always that I love myself, I'm loved, so all those things are creative brain, where you're also creating the kind of life you desire. Then slowly you stop being trapped in your left brain only. Okay, left brain is helping us survive well, right brain is helping us to create our life. So when you're using the left hand, then both the brains का 50-50% दोनों बहुत important है, क्योंकि right brain से तो हम अभी left से ही तो अभी तक काम कर रहे हैं, वो तो बहुत जरूरी है. We are very appreciative towards that, but we have to use creation, because human life has happened only for the purpose of creation and expansion. Only creation and expansion. That's our job profile if we are born as a human being. So let's use that. And that's 40% of our total brain, which is exclusively meant for creation purpose. Okay, we are not even using that. Now we are, of course, like so many of us, we are reading these beautiful books and all that is helping us to dream bigger. And we have created so many things. I have created so many things in my life already. Small things, big things, constantly and constantly creating. Creating by our thoughts alone, we are constantly creating, isn't it? Like deliberately creation को creation बोलेंगे. जो naturally चीजें हो रही हैं कि ओ मेरी life कितनी खराब है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं ये भी नहीं खरीद पा रही, that means that's also creation only. But that's still in the comfort zone. You're still tied to, you're hooked on to the past and to the present. You're not in future presence. So being in future presence is creation. So if I could create a parking space right in front of my office, which is the best parking space possible, I have created that, no, by my thoughts. And I deliberately did it because I wrote it in my journal. Yesterday, when I was making Have a Magical Day practice, मैं रोज करती हूँ, तो मैं उसमें लिखा मैंने कि thank you universe that I got the best parking space with ease, where my car was parked safely. And it just happened that way. So I created that deliberately. है ना, मेरा दिमाग गया वहां पे, बिकॉज वो मेरा कॉज ऑफ कंसर्न था जब मैं सुबह ऑफिस जा रही थी, बिकॉज वो मेरा यूजुअल ऑफिस नहीं है. So this is how we create small little. This is just a very trivial example, but like this we create the bigger things also. Okay, so that is how life has to go. So any problem when it happens in your life, it is just appearance. Basically, that problem has come as a gift from the universe so that we don't walk on that path and we change our path. Simple, है ना. इसीलिए पावर बुक में लिखा था कि जो जो लोग हैं हमारी जिंदगी में जिनकी वजह से हमको वी आर नॉट हैप्पी, जो हमको ऑपोजिट ऑफ हैप्पीनेस देते हैं, तो वो सारे लोग हमारे पीईटीज हैं, पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स. वो यूनिवर्स के भेजे हुए एंजल्स हैं हमारी लाइफ में, जिनकी वजह से जो हमको रब करके हमको पॉलिश कर रहे हैं. डायमंड जब निकलता है माइंड से तो उसमें बहुत ब्लैक होता है, ठीक है, तो उसकी पॉलिशिंग की जाती है, फिर उसकी वो शाइन निकलती है, और फिर वो उसकी वैल्यू जो वर्थ है वो हमको नजर आती है. एंड वी लव टू टेक दैट डायमंड और ज्वेलरी और व्हाटएवर इट इज. So that is how it is. So we also we may be having some black here and there because mind से निकले हुए जो भी पास्ट कर्मास थे, पिछले पता नहीं 7 जन्मों के कर्मा हम कैरी करते हैं, तो वो सारे हमारे साथ हैं. और इस जन्म के भी कुछ है ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण अभी भी पूरा वो मक लगा हुआ है, लेकिन अंदर तो डायमंड ही है ना. तो अब उनको पॉलिश करने के लिए, हटाने के लिए ऐसे लोग, हो सकता है आपका स्पाउस हो सकता है आपकी मम इन लॉ, डैड इन लॉ हो सकता है कोई फ्रेंड हो, कोई बॉस हो, कोई कोलीग हो, कोई नेबर हो, ऐसे लोग जो आपके साथ कभी सहमत नहीं रहेंगे जो आप करना चाहते हो. दे विल नॉट बी पार्टी टू व्हाट यू आर थिंकिंग, राइट, बिकॉज दे आर योर पॉलिशिंग एजेंट्स, and the name given to them is personal emotional trainers. They are the ones who make us mentally and emotionally super strong so that we can achieve our dreams and goals and we can live our dream life. So appreciating the problems is very, very important.
that thank you, universe. I accept and I appreciate whatever situation I am in. Please show me the way as to how to go forward. And thank you for the perfect resolution. Ho gaya bas. Okay? This is who we need to become to be able to live the life of our dreams. And Suman, we are done for today. Thank you so much for visiting India and getting an opportunity to read for us, because back there in Europe, I'm sure अभी बहुत अंधेरा होता है, रात होती है, तो आप पढ़ नहीं पाते हो. Ma'am, this I always watch on the YouTube, and it is really nice, and I'm so glad that I got a chance to read. And I wish that this group gets lots of new members for the new year. And Yes. whoever is existing now, they become lifetime members of gratitude. You know, when sometimes I don't know what to do, you know, for magic dust to people, I just, you know, wish them that they also find a path of gratitude. Instead of, you know, wishing normal health, wealth, and happiness, I always wish that everybody, all of those people, find their way to gratitude journey. Yeah, thank you so much. You can Thank you. have your own target of what is that number that you want to see and how many lives you want to see change through the sessions. And thank you for being so consistent on the YouTube, because it is night time in your country when the sessions happen. Thank you so much, and God bless you with the most amazing career path that you're going to choose for yourself, and you'll make it big, I know for sure, Thank with you. your Thank kind you. of sincerity. Yeah. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Antim, yesterday we could not. So I just wanted to, Sonia ji, you're there on the call. If I just wanted to answer something that you had said, because कल आपने वो बोला था कि वो टू डू लिस्ट के बारे में कुछ आपने ऐसा मेंशन किया था कि डेली, वीकली, मंथली ऐसे नहीं बनाते हैं टू डू लिस्ट. अकॉर्डिंग टू द बुक जैसे हमको समझाया हुआ है, दीज आर द थिंग्स करेंटली जो आपको करनी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा. जैसे आपकी चेन कहीं पे आपने रख दी, गोल्ड चेन और डायमंड रिंग, और आपको नहीं मिल रही है. आपको पेट खरीदना है, आपको एक बहुत अच्छा हेयर ड्रेसर चाहिए, यू वांट टू हैव अ डिफरेंट ब्यूटीफुल स्टाइल एंड हेयर कलर फॉर द न्यू ईयर्स, और यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड कुक, और आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना है. ये वो चीजें होती हैं. टू डू लिस्ट इज नॉट डेली, वीकली, मंथली. दैट इज नॉट हाउ दिस प्रैक्टिस इज गिवन यू. दैट इज गेटिंग इनटू द हाउ ऑफ इट. ओके, यू डोंट नो कि वो चीज जो 1 महीने के बाद होने वाली थी, वो हो सकता है आज ही हो जाए. कुछ ऐसा हो जाता है, बिकॉज द डे यू सरेंडरिंग. इसीलिए टू डू लिस्ट में हमने वो इमेज देखी थी कि वो पेपर था और उससे हाइड्रोजन बलून के साथ वो कनेक्टेड था, और वो सरेंडर कर दी थी आपने लिख के. ठीक है, तो डेली, वीकली, मंथली नहीं होता. हो सकता है कि जो 35 डेज के बाद चीज होने वाली थी, वो आपको कल ही आपको कोई फ्रेंड मिलेगी और वो बोलेगी कि you admire haircut, और बोलेगी I've got a beautiful hair color and a great hairdresser, I've just found one and he's amazing and this and that, and you will just, वो जो आप पहले सोच रहे थे कि तब होगा, वो अभी हो जाएगा. सो इट इज नॉट लाइक दैट. हो सकता है कि घर का पोजेशन चाहिए था, घर खरीदा है और उसका पोजेशन अभी तक मिला नहीं है, वो आपकी टू डू लिस्ट में हो, है ना. तो हो सकता है कि वो पोजीशन जो 20 डेज के बाद अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स मिलने वाला था, मैजिकली वो आपका विद इन अ वीक हो जाएगा. ठीक है, सो टू डू लिस्ट डेली, वीकली, मंथली नहीं बनाते हैं कभी भी. दैट्स डन. वो एकदम से कल आपने जब बोला था मैं जवाब देना चाहती थी, बट कल मुझे भागना था जिम और फिर ऑफिस, तो इस वजह से मैंने उसको एड्रेस नहीं किया था. बट मेरे दिमाग में था दैट मैं आपको या तो सेपरेटली बात करूं या यहाँ करूं, बट देन हियर आई थॉट दैट ऑन दिस बिगर प्लेटफॉर्म वी ऑल विल गेट अ क्लैरिटी. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी दैट वी कुड क्लैरिफाई दिस. यस अंतिम, अब आप बताइए. Good morning, ma'am. Ma'am, I had brought in my dream list. Okay, I got the highest mark in my class, so I do it. So I am very happy for it. Wow, congratulations. Thank you, ma'am. तो अंतिम, तो आपको अभी तो आप ग्रेड 9 में हो, आपको बहुत ऊंचा जाना है और आपको पूरी इंडिया को लीड करना है, जिस भी फील्ड आप जो भी चूज करो, क्योंकि आप इतने छोटे पन से ग्रेटिट्यूड जर्नी में हो, है ना. Yes, ma'am. Yeah, thank you, and many, many congratulations from all of us. And may you really bring a lot of proud to your parents, to your teachers, to Bharti ji, and to, your school. You will be the pride of your school. So thank you for sharing. Yes, Thank you, Shalini. ma'am. Thank you.
Good morning, ma'am, and good morning, everyone. I just wanted to share a few days ago, like 24th and 25th was my trip to Dehradun because we wanted my son to get back here and, because he has to work now. So मैं magical morning में उठी आपका सेशन भी अटेंड करके we left around 7:30 बट मैं पूरा लिख के गई क्योंकि आजकल बिकॉज ऑफ विंटर्स there's lot of fog etc और ड्राइविंग थोड़ा सा ऐसा हो जाता है. So I really prayed for a beautiful sunny day today and tomorrow. And जो मुझे चाहिए था, good food on the way, and neat, clean washrooms, everything, And उसके बाद the journey began. And आप मानेंगे नहीं मैम, आना जाना, not even a single patch, not even for a minute, I got fog anywhere. और वहां पे गई जब मैं ट्रैवल कर रही थी द ब्यूटिफुल पार्ट इज कि मैं सबको जो भी मुझे कार्स एंड बाइक्स और जो भी क्रॉस कर रहे थे आई वॉज विशिंग देम सेफ जर्नी हैप्पीनेस हेल्थ एंड वेल्थ यही बोलती जा रही थी. आई डोंट नो मैम वो 5 आवर्स में कितने बाइक्स और कितने साइकिल्स और कितने कार्स और कितने ट्रक्स को किया. एंड ऑन द वे सारे इधर उधर सब फार्म्स थे, मैंगो ट्रीज थे, बहुत मैंगो ट्रीज होते विच आई रियली एडमायर्ड. और एयर को सबको इतना थैंक यू करती गई और आई डोंट नो मैं किस लेवल में थी मैम. और उसके बाद एक पेट्रोल पंप पे रोका बिकॉज आई वांटेड टू गो टू द वॉशरूम एंड बस गाड़ी से उतरते ही बोला कि थैंक यू सो मच फॉर स्पिक एंड स्पैन वॉशरूम. एंड मैम आप मानोगे नहीं द मोमेंट आई स्टेप्ड इनटू द वॉशरूम जो मुझे ऐसे लगता है कई बार लेकिन इट वाज जैसे मेरे आने से पहले उसको अच्छे से कोई धो के गया होगा. Literally shining or absolutely neat and clean. That was so amazing. और उसके बाद मैं वहां पहुंच गई देहरादून में और जब मैं देहरादून में स्टेप इन की आई वॉज इन सो मच डीप ग्रैटिट्यूड विद दिस लैंड बिकॉज आई रियली फेल्ट आई लेफ्ट माई सन देयर इन क्लास 12 के बाद अ बॉय नाउ ही इज अ जेंटलमैन एंड उसका देहरादून ने मेरे बेटे को इतना प्रोटेक्ट करके रखा, इतनी एजुकेशन दी, द वे ही इज नाउ इतना बढ़िया इंसान बनाया. डीपली ग्रेटिट्यूड में थी एंड बहुत अच्छा लग रहा था. उसके बाद आई वेंट टू हिज हाउस और वंश इज ऑल्सो अ नेचर लविंग पर्सन. ही टोल्ड मी ममा आप मॉर्निंग में उठोगे ना, यू लव सनराइज, आप प्लीज बाहर आ जाना 7 बजे के करीब. एंड उसका घर मतलब दिल्ली में मतलब सनराइज का मतलब है क्वाइट हाई बट देयर सनराइज वाज लाइक एट माय लेवल. और इतना ऑरेंज बॉल द मोमेंट आई ओपन द डोर सारी रेज अंदर आ गई पूरा वरांडा में एंड इवन जो एक रूम खुला हुआ था उसके अंदर भी जा रही थी. इट वॉज सो ब्यूटिफुल मैम, आई कांट टेल यू. इतना ग्रेटिट्यूड उसके लिए पे किया. एंड वंश जो है ही लाइक बचपन में जब वो स्कूल बॉय था तो ही वाज सो मच इनटू साइकिलिंग लेकिन जब देहरादून गया ही वांटेड अ बुलेट. ही वाज लाइक जैसे बॉयज को शौक होता है तो अब ये था कि बुलेट भी वापस आनी थी. तो एक बार तो मुझे पहले लगा था कि बुलेट को हम ट्रक में लोड करा के ले आए वंश. नो बट ही सेड नो, दिस इज माय पैशन मॉम, आई एम गेटिंग अ चांस टू ड्राइव बैक होम, आई एम गोइंग टू राइड माय बाइक एंड कम बैक. तो एक बार एज अ मदर लगता है बट देन बिल्कुल चिंता नहीं. और नेक्स्ट डे जब हम आने लगे एंड ही हैड टू बी ऑन द बाइक आई जस्ट सेड यूनिवर्स आई वांट टू एंजॉय इन माय कार एंड म्यूजिक एंड ग्रेटिट्यूड पेइंग और सब कुछ करूंगी, प्लीज टेक केयर. वंश इज सिटिंग देयर बट आई रियली ट्रस्ट फील that you are driving the bike उसकी. So you are there taking care of him and मैं गाड़ी में. उसके बाद मैम हम ये सब करके बड़ी सेफली बहुत अच्छे से घर पहुंच गए और एक भी जगह पैच नहीं दिखा जो फॉगी था. बिल्कुल क्लियर सन एवरीवेयर, जो वंश को भी दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे भी नहीं आई. ठीक है, सब हो गया. आई केम बैक होम. नेक्स्ट डे वन ऑफ माय फ्रेंड्स कॉल्ड मी अप कि आ गए तुम लोग देहरादून से. शी सेड आई केम बैक येस्टरडे, मतलब 1-2 दिन के बाद उसका फोन आया तो आई केम बैक येस्टरडे. शी सेड शालिनी 4-4.5 घंटे की ड्राइव वी कुड डू इट इन 9 आवर्स. कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा. इट वाज सो स्कैरी, कैन यू बिलीव मैम. सो दैट वाज लाइक मुझे रियलाइज हुआ ओ गॉड मैंने मैजिकल डे किया था और सारी चीजें मेंशन की थी. इट वाज एग्जैक्टली द वे आई रोट मैम. थैंक यू सो मच फॉर योर टीचिंग मैम. थैंक यू. Amazing, Shalini, and I love you for being sincere and grateful to this extent that you are. It is incredible. You are थैंक यू exemplary मैम. and very, very inspiring.
Thank you and And ma'am, wish you I and Vansh personally, the best of life. thank you so much. And ma'am, personally, I went to the university also. और मैं उसके गेट पे खड़े होके deep gratitude I was in. This is incredible, Shalini. Way to go. There's so much to learn from you. And इतना प्यारा बच्चा देहरादून ने दिया है, अपनी गोद में पाल पोस के बड़ा किया है. तो एक मम्मा शालिनी है और एक मम्मा का असिस्टेंट देहरादून भी है. Yes, ma'am. Yeah. ना? Thank अब you. देखो, his life is going to be so amazing. He will make our country proud, whatever part of the world that we cannot Yeah. decide. है ना? But Yes, wherever. ma'am. And a very, very beautiful dialogue I really tell my son is Three Idiots का ना, वो मुझे भी बहुत पसंद है. Capable, काबिल इंसान बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आ जाएगी. हाँ, This is my वो बाय favorite. प्रोडक्ट होता है. Yes, ma'am. इसीलिए जब Yeah. सब लोग बोलते हैं ना कि मुझे एग्जाम में इतने नंबर चाहिए, तो मैं यही बोलती Yeah. हूँ, लर्निंग पे Yeah. फोकस करो. Absolutely, डिग्री तो ma'am. बिकती भी है आजकल. डिग्रीज Absolutely, पीपल ma'am. सेल ऑल्सो. लर्निंग पे फोकस करो. अपने आप Yeah. पीछे देखो. ऑन एन एवरेज मैं एक दिन में 2 इंटरव्यूज लेती हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन Right. के लिए, एनीवेयर, है ना. मैं कभी किसी के नंबर नहीं देखती, और हम में से कोई भी, क्योंकि हम सब सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं, हम में से कोई Right. भी कभी भी किसी की मार्कशीट नहीं मांगता. ठीक Right. है, कभी भी Very नहीं. true. इट रियली Very डजंट true. मैटर. और मुझे Wow. जो जिस तरह इंसान दरवाजे से लेके मेरी डेस्क तक आके बैठता है ना, मुझे पता चलता है Right. आई हैव टू रिक्रूट दैट पर्सन, Exactly. नॉट. बाकी सब So सेकेंडरी true. है. So that is Right. what makes us more capable. Learning and Right, ma'am. knowledge. It is not the Right, ma'am. number. So for all the parents Yeah. out there, don't be after the children's life कि 94 क्यों आए, कि Absolutely. 97 क्यों नहीं आए, है ना? So Yes, this. ma'am. Thank Yes, you ma'am. so much, Shalini, for sharing. Thank you, ma'am. And Thank you God so much, bless ma'am. you. Thank you. And see Thank you, you ma'am. at 12:30 today. Yes, ma'am. Eagerly waiting to see you and Yeah. everybody. So Yeah. guys, Thank you, everyone ma'am. in Where's the Delhi, meet the today, Delhi Deepti? group of Super Accelerated is meeting today. Yes, ma'am. Deepti, where's the meet? Courtyard Unplugged Cannot Place. Please put in a lot of blessings, and if anyone can come, of course, like Courtyard where? Cannot Place. Cannot Place, Courtyard Unplugged Cannot. कितने बजे किस This टाइम goes live on the YouTube. टाइम प्लीज I think someone put it in the chat box? Dipti, Tiny, ma'am, you have the details. Dipti, beautiful foggy weather of Jaipur with 9 degrees. Wow. Even Delhi, yesterday it was so cold. I was enjoying that beautiful color of the Yes. weather that, we don't get to see often. It was chilly winds coming on the face, and it was so, Yes. like Same amazing. here. Yeah. That is why I covered so fully ekdam terrace pe. Yeah. See, It's it's so amazing. nice. Yeah. Thank you. So there's details in the chat box, guys, from Priyanka Bharadwaj, the Delhi group of people. And we all also need to pray about the number of tables increasing, because those people have not been picking up the phone. So the table reservation was done for 12, but then don't worry. We all create things. So we can create anything out of anything. Alchemists who can turn anything into gold effortlessly. That's who we are. Yes, Muskan. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन. Morning. Camera on मैम करो. मैम आज मैंने उल्टा सीधा कलर का स्वेटर पहन रखा. उल्टा कलर तो कलर होता है. कुछ भी पिक करा. मैम आई हैव गॉट टू शेयरिंग. ये जो आज मैजिकल एयर वी ब्रीथ है, तो इसका ना चैप्टर मैंने टिट्स एंड पिट्स में पहले सुना था. तो व्हेन आई वाज इन मेदांता गुड़गांव डूइंग माय इंटर्नशिप, तो मैं आई लव माय कार, तो मैं खुद भी ब्रीथ करती थी. और आई ऑलवेज यूज्ड टू से थैंक यू कार, यू आर ऑल्सो ब्रीदिंग इन द एयर. तो मैं उसके लिए भी थैंक यू बोलती थी. मतलब उसके जो टायर्स होते हैं ना, मेरे को बहुत खुशी मिलती थी. आई जस्ट लव माई कार. तो वन डे क्या हुआ, व्हेन आई वाज कमिंग बैक होम फ्रॉम मेदांता, आई वाज ड्राइविंग. सो 10 किलोमीटर रह गए होंगे मे बी, वो धोला कुआं का फ्लाईओवर टिल पश्चिम विहार. तो सब लोग मेरे को नॉक करके बोल रहे हैं, मैम आपकी कार का टायर पंचर हो गया. एंड वो सिंस वो फ्लाईओवर था,
तो उसमें ये नहीं पता था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कहाँ से वो लगवाना होता है पंचर वगैरह क्या। मैंने बस यूनिवर्स को मैं बहुत काम हो गई, मतलब मुझे खुद नहीं पता, मैं बस बोल रही थी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब अपने सारे एफएम रेडियो सब बंद करे मैंने, जो सुनते आ रही थी अपना ही गाना गाया थैंक यू थैंक यू। और मैम आप मानोगे नहीं, 10 किलोमीटर्स मैंने बहुत सेफली और अच्छे से ड्राइव करी। वो गाड़ी एग्जैक्टली मेरे घर के बाहर रुकी जहाँ पे वो पंचर लगता था, एंड वो जस्ट सेइंग थैंक यू फॉर माई कार थैंक यू। आई फेल्ट लाइक कि वो जो उसको मैंने जो पहले एयर ब्रीथ बोला था उसने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे नहीं पता, बिकॉज आई वॉज कमिंग वेरी लेट फ्रॉम द हॉस्पिटल, उस दिन लेट था, तो आई डोंट नो कि क्या होता है क्या नहीं। एंड फिर पापा से भी फ़ोन पे बात हो गई थी, माई फादर ऑलवेज बूस्ट मी अप, वो कहते हैं तू कर लेगी। एंड कृष्ण जी को ना हमने आगे बिठा रखा है, तो वो मुझे रिमाइंड करवाते, देख तेरे साथी तो बैठे हुए हैं तेरे साथी तो बैठे हुए हैं। बिकॉज मतलब आई फील लाइक वो मैजिक उस दिन हो रहा था, मैं बहुत आराम से सेफली आ गई। एंड देन आई वाज, जब पापा दिखे मैंने कहा पापा मैं आ गई तो इट वाज दैट वन शेयरिंग। सेकेंड शेयरिंग वॉज कि आई जस्ट लव वॉट एवर माई मॉम्स कुक, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ माई मॉम। इवन तो मैं डाइट प्लान बनाती हूँ बट मुझे अपनी मम्मी के हाथ का चाहिए तो मुझे बहुत दिनों से डोसा खाना था, ना मॉम्स मेक फर्मेंटेड डोसा लाइक मिलेट्स का एवरीथिंग शी सोक एंड फर्मेंट, तो इट टेक्स टाइम। तो आई वाज लाइक मम्मा बना दो बिकॉज शी मेक्स द बेस्ट। तो शी सेड कि ठीक है आई विल मेक इट नेक्स्ट वीक फॉर यू। सो मैं बस ठीक है, आई वाज लाइक ओके। तो नेक्स्ट इन द मॉर्निंग मुझे कुछ लाना था ब्रेड वाली शॉप से। सो नियर बाय शॉप पे मैं गई, उन भैया ने बोला नहीं है मेरे पास। सो पता नहीं ऐसे मन में आया कि मैं 1 किलोमीटर वॉक करते करते दूर वाली शॉप पे गई। आई वाज लाइक मुझे तो लाना है, बट मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए गई। एंड मैम सुबह सुबह कोई फ्रेश डोसा बना रहा था, मैंने ना राइट देखा ना लेफ्ट मैंने कहा मेरा डोसा पैक करो भैया, मुझे डोसा खाना है। एंड फिर जो सामान लेना था वो मैंने वापस आकर उसी शॉप से लिया जो घर के पास। मैंने कहा भैया आपके पास थैंक यू, वो सामान नहीं था, आपकी वजह से मेरे को डोसा मिल गया। सो मैम घर आके इतनी खुशी से खाया। इनफैक्ट आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, माई मॉम्स मेक वेरी गुड ज्वार का डोसा रागी का डोसा फर्मेंटेड। सो मैम ये मेरी 2 शेयरिंग थी। वाह, बहुत क्यूट शेयरिंग्स होती है तुम्हारी रोज रोज डोसा खाने से बोर हो जाओगे, अब अलग अलग चीजें खाना सारा खाना अप्रिशिएट कर करके। एंड फॉर एवरीवन, अपनी कार्स को, जो भी व्हीकल्स है हमारे यहाँ पे, बाइसिकल है या मोटर बाइक या कार या जो भी आप चलाते हैं, every day say thank you and I love you to your cars and to your vehicles. Do that and see the magic. In the worst of the circumstances also, your car will start supporting you, because it is said that there is life in every sentient and insentient being. Even if it is a wall or a furniture or a chair or a dining table or a gas ka chulha with the burners or an RO system or the dabbas in the kitchen jahan pe hamare dal और rice और वो सब stored रहते हैं, or a pot in which we put the plant. Everything which is non-living is what we think, okay? They all have life. It is written in the scriptures and in the all the teachings, that says that all sentient and insentient. Sentient is जो जिनमें life होती है, जैसे human beings, animals, plants, है ना, ये सब grow करते हैं and all that. Chair तो grow नहीं करती है, लेकिन at the quantum level there is an energy field around them. There's an energy field around us. So when you say really thank you to your, so मैं अभी भी अपनी कार को निकालने, मतलब whenever I sit in my car, I always say thank you and I really love you and thank you for always making travel so easy for me. And पुरानी वाली कार तो, ये न्यू वाली तो मैंने 1.5 साल पहले अपने लिए एक और खरीदी है, पुरानी वाली मैंने सेल नहीं की थी, वो भी मेरे पास है। तो मैं उसको भी जाके बोलती हूँ कि 6 साल तक मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी लाइफ को इतना ईजी करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग सो परफेक्टली, एंड इट ऑलवेज लिसन्स टू यू. If you say thank you to your doors, to your furnitures, to your gas, to the dabbas in the kitchen, to your makeup stuff, or to the face cream and all that, they are all listening and responding. Okay? Always remember that. They all listen. At the quantum level, we can see the energy field around them. I told you, Hyderabad में वो बाला सुब्रमण्यम जी ने energy field detect किया था ना, उन्होंने मेरे pearl earrings का, because I wear pearls, सो उन्होंने मेरे पर्ल इयरिंग्स का किया था, उन्होंने मेरी डायमंड रिंग का किया था जो मैंने राइट हैंड में पहनी हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने बहुत सारी, एक धागे का किया था जो मैंने बांध रखा था अपने हाथ में।
ठीक है, वो जो नॉर्मल मॉली होती है, तो वो उन्होंने उन सब का एनर्जी फील्ड, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनसे भी निकलती है। तो ये तो हमें पहले से ही पता था कि सेंशिएंट इंसेंशिएंट बीइंग्स, क्योंकि मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि अपने घर की दीवारों को भी थैंक यू बोलो, यू नो दैट दे आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड। और बाहर बालकनी में जाके, यू नो दैट बालकनी जिसमें खड़े हुए हो, उनको थैंक यू बोलो। तो इस तरह से everything that you consider non-living and lifeless is radiating electromagnetic radiations, and that makes an aura of that particular thing also. So when you saturate it with thank you and I love you, you will see the things in your life surrounding you. You'll start attracting material goods into your life as well, you know, and they will never break down. And even if they need a repair, they will break down at a time when you're not needing them, and at a time when you can easily get them fixed. And the fixer will be there around you. You know, it is like that. This is how life works and life operates. So thank you, Muskan, for sharing that you say thank you to your car. And, you know, so this is a new Ma'am, insight that we keep getting from all the sharings. And people in Delhi, see you soon. ma'am, And I wanted to ask a question. Anji, Anji. मैम जैसे कि मैजिकल एयर हम करते हैं मॉर्निंग में, डेली आई डू इट, तो आई प्रे टू एयर लाइक दिस कि थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर मी एंड माय फैमिली ब्रीथ्स, इज दैट ओके? Yeah, I mean, like, just expand your prayer and, you know, the human creation सारे breathe करते हैं, आप वो कर दीजिए, फैमिली उसी में आ जाती है। और prayers कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती है। ओके, थैंक यू। Okay, like on the planet Earth, all the humans are inhaling that air, which is giving them life. So say thank you, that entire, the whole universe. So that prayer will be much bigger. So your family will be hugely protected because of that prayer, because you're radiating to so many people. So सोचो वो frequency जो 8.5 billion population की तरफ आपने भेजी है, वो multiply होके सोचो कितने बड़े फॉर्म में आपके पास वापस आएगी, है ना? यस So अपने मैम। फैमिली से आप प्रेयर को एक्सपैंड कर लो, ठीक है? सारी ह्यूमन लाइफ को करते हैं, ठीक है? चलो, ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच, बाय बाय, हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड से Have a गुड बाय टू blast, दिस ma'am. with a bang. Bye, ma'am. Thank you, bye Lakshmi, bye. you Thank have you, a ma'am. Thank Thank blast. you, you so much, ma'am. ma'am. Thank We will you, miss it. Have a great weekend, all of you. Bye-bye. thank you, Thank bye.